In a world where technology shapes the future, DXC Technology India stands at the forefront of change. As a leader in digital transformation, DXC leverages cutting-edge technologies to drive innovation across industries. Furthermore, DXC understands that beyond innovation and progress lies a deeper commitment to communities, empowerment and inclusivity. Through initiatives that bridge the digital divide and promote skills development, DXC is not only advancing technological capabilities but also fostering a more inclusive and equitable society. In today's interconnected world, technology plays a crucial role in shaping our future. While it opens a world of possibilities, it also widens the gap between those with access and those without. DXC aligns its initiatives with its core value of community and care. It also believes that technology can help break barriers to go the last mile and level the playing field. DXC Technology India recognizes the importance of bridging this digital divide and the importance of giving back to the communities they operate in. The digital resource centers established in 20 aspirational districts have helped provide digital access to over 7 lakh people from marginalized communities who now have Aadhaar cards and access to government schemes. DXC's CSR program reflects our core values. We strive to solve social challenges using a multi-dimensional approach across skilling and livelihoods, education and digital literacy, and diversity and inclusion. We believe that a great organization is one that not just looks within, but also looks without. We grow when we all grow, the organization and society. We see ourselves as catalysts. Yes, of course, we have resources. But more importantly, we have an unwavering intent to create an environment of positive change, which is why we focus on diverse issues and deep, sustainable impact. As a technology company, we understand the importance of technology. Intentional use of technology can go a long way, whether it's skills building or creating access to government schemes. Whether one lives here in rural India or among the urban poor, technology helps bridge gaps and has transformative powers. We choose our non-profit partners with a lot of thought and deliberation. We aim for a long-term association with our implementation partners. This ensures that the interventions can build both depth and scale. As a virtual-first company, our interventions are pan-India, but we take care to ensure local contexts are taken into account and continuously adapted. This is what makes our work exceptional. Skilling is a central lever of DXC's social impact work. With over 9,000 women having been trained in advanced technical skills, DXC has added hundreds of women to India's corporate jobs. Digital Resource Center at the Aspirational District is actually a well thought through program where we have identified and trained women digital ambassadors from the community. These are ambassadors who are further taking the program ahead, so this becomes also very sustainable in the nature, and working very closely with the local government and ensuring that whatever is appropriate schemes and services that the community needs, the digital ambassadors are able to take it forward. We have impacted almost 4 lakh lives in the last year. And of course, the work carries on. The aspirational district are getting ready to become the workforce in the future. In the last year itself, along with the DXC support, we skilled almost 28,000 marginalized youth. What is also unique about this program is that while we were targeting the marginalized youth, there was a huge focus on women, and along with that on people with disability and youth from the LGBTQ background. So the program was all about skilling the marginalized but ensuring that it's an inclusive program, and the program is actually ensuring that there's a flow of youth into the tech industry, and whether from the point of view of the aspirational district program or the skilling program, DXC is ensuring that no one is left behind. DXC's initiatives pay special attention to people on the margins.
Their skilling and technology programs have been tailored for persons with disabilities, supporting them through knowledge and skill enhancement training, distributing 1,567 assistive devices and conducting awareness campaigns across 7 states. ज्वाइन होने के बाद इधर मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग, बीपीओ, कम्युनिकेशन स्किल और आईटी का ट्रेनिंग भी हुआ और ये 3 महीने का कोर्स था जुलाई से सितंबर तक। उसमें डीएक्सी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट था। बाद में 3 महीने कंप्लीट होने के बाद मेरे को प्लेसमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिली। अभी मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। समर्थनम ट्रस्ट के बारे में मुझे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि समर्थनम ट्रस्ट डिसेबल पर्सन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है। समर्थनम ट्रस्ट और डीएक्सी टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जॉब फेयर लगा था और उस जॉब फेयर में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं अभी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। Working with disabled persons need deeper commitment and multifaceted approach in transforming challenges into opportunities. These devices have significantly contributed in their mobility, economic independence, and accessing facilities. The strength of our partnership is our shared vision and mutual respect. Technology can transform education, and DXC's initiatives ensure that underprivileged communities have access to digital learning. In government schools, smart classrooms equipped with digital aids are revolutionizing the way students learn. हो, नक्कीच फायदा होतोय, कारण मुलांना जो बोरपणा असतो तो या डिजिटलमधून खूप काही कमी होतोय. मुलं स्वयंप्रेरणेने शिकण्यास इच्छुक होतात आणि आमचा बराचसा ताण त्याच्यामुळे कमी होतो. हो, बराचसा फायदा होतो. खूप काही बदल दिसतोय, कारण ब्लॅकबोर्डवर मुलं बोर होतात आणि याच्यातून मुलं मनोरंजक पद्धतीने आणि शिकत असतात. हा एक खूप फायदा होतो. आमचे काही शिक्षक आहेत ते त्यांच्यामध्ये खूप काही म्हणजे असं त्यांनाही स्वतःला शिकायला मिळतं आणि मुलांनाही ते आनंदाने शिकवत असतात आणि त्याच्यामुळे खूप काही असं बदल थोडक्यात दिसून येतोय. हो, हे डिजिटलला येण्याच्या आधी काही मुलं जे म्हणजे अशी मागे बसायची, घाबरून राहायची, पुढे येण्यास तयार होत नव्हते, तीच मुलं आता या डिजिटलच्या माध्यमातून पुढे येऊन आणि स्वयंप्रेरणेने शिकण्यास तयार झालेले आहेत. हा एक मोठा फायदा या डिजिटलमधून झालेला आहे. मला टीव्हीची, कारण की ब्लॅकबोर्डवर शिकवतात ना ती पद्धत थोडी वेगळी. जर मला टीव्हीवरती शिकवलं होतं ना तर मला थोडं समजलं, कारण की त्याच्यामध्ये व्हिडिओज होते ते बघून मला समजायचं. बोर्ड पे जो चित्र बनाकर दिखाते हैं उसमें इतना नहीं समझ में आता जितना टीवी में चलता फिरता कार्टून की तरह वीडियो दिखाते हैं उसमें उतना समझ में आता है. Young girls from marginalized backgrounds are amongst the most vulnerable. Lack of access to technology and education only adds to their disenfranchisement. DXC's programs include the entire gamut of enabling access from computer training, STEM scholarships for higher education, and rural entrepreneurship training programs. ग्रेजुएशन मेरी फाइनल ईयर की होती तभी मेरे फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद से उनका भी सपना था कि मैं आगे पढूं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई मुझे मजबूरन छोड़नी ही पड़ी. छोड़ने के बाद मुझे खुद में ही लड़ाई थी मेरे लिए कि मैं कैसे करूं, इसलिए मैंने अपने सपने को छोड़ दिया और अपने बहन भाइयों के एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दिया. पहले इनको इनके पैरों पे खड़ा करना है, इनकी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, देन अपने बारे में सोचना होगा, वो भी अगर टाइम मिला तो. फाउंडेशन में जब मैं गई वहाँ मैंने कोर्स किया और जिस तरह मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ, मुझे पता चला उनके बारे में कि नहीं, मैं अपनी शॉप के साथ अपने काम के साथ साथ ना वहाँ पर भी जा सकती हूँ और देख सकती हूँ और सीख भी सकती हूँ. सिर्फ इतने कम वक्त में मैंने बहुत कुछ सीख लिया वहाँ से और अपने ही दम पर एक जॉब भी चाहो तो मैं आगे कर सकती हूँ. हम अपने काबिल हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, तो डाउरी की क्या नीड है. लेकिन यहीं अगर इस बात को कोई लड़की बोल देना अपनी फैमिली में या फिर कहीं और भी तो उसको गलत समझ. इसलिए मैं चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मैं अपने आप को थोड़ा सा डेवलप. मेरा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत बदला है यहाँ पे आके, एंड कम्युनिकेशन स्किल और बाकी सारी चीज़ें बहुत कुछ सीखा है हमने यहाँ से. मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगी कि इंडिपेंडेंट बनो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो बहुत अच्छी बात है. आप अपनी बातें रख सकते हो, दूसरे आपकी बातें सुनते भी हैं. In conclusion, DXC's social initiatives focus on long-term change by ensuring that the reach is not only wide but also deep and meaningful. At DXC, we're looking to continue to build on the work we're doing, to deepen our existing partnerships with both the communities and the non-profits we work with, and also to work closer and closer with other functionaries on the ground.
At DXC, we believe a better world is possible. Government, corporate, and civil society needs to work together to truly make this happen. Convergence is really the future.